अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए MCQs लाया हूँ ऑन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट MCQ से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस? वी हैव 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस कौन है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट्स माउस. So, what is the function of the pointing device? It allows user to interact with computers graphical user interface by pointing and clicking. The right option is option C. Mouse is a pointing device. Moving to our next question. What is the function of the left mouse button? जो mouse पे हमारा left button होता है उसका क्या function होता है? Option A, scroll the screen. Option B, display extra menus. Option C, move the cursor. Option D, select or move item. The right option to this question is option D, that is select items or move items. Moving to our next question. How many function keys are there on the standard keyboard? स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे कितने फंक्शन कीज होते हैं? ओके, द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज वी हैव 4 ऑप्शंस 15, 10, 12, 14. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 12. Actually the standard keyboard has 12 function keys labeled from F1 to F12. So right option to this question is option C. Moving to our next question. Which type of keys are used for operation such as home and insert? ओके, जो हमारे पास होम की होती है, एंड की होती है, इंसर्ट की होती है, इन कीज़ को हम क्या कहते हैं? ठीक है, कंट्रोल कीज़, ऑप्शन बी स्पेशल कीज़, ऑप्शन सी टाइपिंग कीज़, ऑप्शन डी न्यूमरिक कीज़. द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज स्पेशल कीज़. होम की हो, एंड की हो, इंसर्ट की हो, पेज अप पेज डाउन, इन सब को हम स्पेशल कीज़ कहते हैं. तो वी कैन गो विद ऑप्शन बी. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the function of the right mouse button? Option A, display extra menus. Option B, move items. Option C, select items. Option D, drag items. तो राइट बटन का काम क्या होता है माउस में? डिस्प्ले एक्स्ट्रा मेनूज. So right option is option A. Question number 6. Which device is specifically designed to provide input in the form of audio? कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड इनपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो? मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन की. इसका तो राइट आंसर आएगा, दैट इज माइक्रोफोन. ये तो सबको पता होगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is a control key on a keyboard? Option A, Alt. Option B, numlock. Option C, Enter. Option D, Shift. The right option to this question is option A, that is Alt key. Alt, Control, Shift जो है एक्चुअली ये कंट्रोल कीज़ होते हैं. तो यहाँ पर शिफ्ट भी है, तो Alt और शिफ्ट है ना, इसका दोनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं. We can say both options are right. Option A, option D. What is the main use of joystick? Joystick का main काम क्या है? The right option to this question is option D, that is to control the on-screen cursor or pointer. तो joystick किसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं? गेमिंग और ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर और कैरेक्टर ऑन ए स्क्रीन. सो वी कैन गो विद ऑप्शन डी. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डिवाइस हेल्प्स विच डिवाइस हेल्प्स in creating high quality graphics images on paper using pen like instruments? We have 4 options. Option A, GPS. Option B, video card. Option C, plotter. Option D, we have option D, projector. तो कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं
which helps us in creating high quality graphics and images on paper using pen like instruments. The right option to this question is plotter. So plotter is used to create high quality vector graphics and detailed images on paper. Plotter. उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे. What is the function of video code? What is the function of video code in computer system? Option A, to display images on a screen. Option B, to create braille text. Option C, to track geographical locations. Option D, to produce sound. The right option to this question is to display images on screen. Option A. उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाउ इज जॉयस्टिक टिपिकली मूव्ड टू कंट्रोल द कर्सर? ऑप्शन ए, बाय रोटेटिंग अ बॉल. ऑप्शन बी, बाय स्लाइडिंग द स्टिक इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ऑप्शन सी, बाय प्रेसिंग बटन्स. ऑप्शन डी, बाय टैपिंग ऑन अ सरफेस. द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, बाय स्लाइडिंग द स्टिक इन डिफरेंट डायरेक्शंस. Moving to our next question. What is composite device? Option A, a device that can perform multiple functions. Option B, a device used exclusively for storage. Option C, a device used only for output. Option D, a device used only for input. The right option to this question is option A, that is a device that can perform multiple functions. जैसे कि हमें फोटो स्टेट करना होता है तो वो स्कैन भी करता है और उसकी कॉपीज़ भी देता है, तो दोनों फंक्शन करता है. तो फोटो स्टेट मशीन जो है ना, दैट इज़ कंपोजिट डिवाइस. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट. उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल की प्राइमरी फंक्शन क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस. टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स, टू प्रोवाइड मेथड फॉर कर्सर मूवमेंट सिमिलर टू माउस. Option C, to read printed text. Option D, to replace keyboard. The right option to this question is to provide a method for cursor movement similar to mouse. Mouse की तरह ही होता है. उसके बाद which of the following device has a structure similar to mouse and uses finger for cursor movement? किस डिवाइस का जो स्ट्रक्चर है वो माउस की तरह होता है? ये तो ट्रैक बॉल का ही होगा. तो ऑप्शन डी, ट्रैक बॉल. उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज़ लाइट पेन प्राइमरली यूज फॉर? लाइट पेन किस लिए यूज़ करते हैं? टू रिकॉग्नाइज प्रिंट टेक्स्ट, टू सिलेक्ट मेन्यू आइटम्स और ड्रॉ ऑन मॉनिटर स्क्रीन, टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स. ऑप्शन टू चॉक एग्जाम पेपर. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्कैनर? टू रिकॉग्नाइज ऑप्टिकल मार्क्स, टू क्रिएट डिजिटल कॉपीज ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट्स, टू क्रिएट कर्सर मूवमेंट्स, टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम प्रिंटेड टेक्स्ट. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. उसके बाद व्हाट आर ऑप्टिकल मार्क रीडर्स मोस्टली कॉमनली यूज्ड? वो है हमारे किस लिए हम यूज़ करते हैं? फॉर क्रिएटिंग डिजिटल इमेज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फॉर चेकिंग आंसर्स. ऑप्शन सी, इन ग्राफिक डिज़ाइन. ऑप्शन डी, फॉर ड्राइंग मॉनिटर्स. द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. विच डिवाइस रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन रीडेबल कोड? ट्रैक बॉल. ऑप्शन बी, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ऑप्शन सी, लाइट पेन. Option D, scanner. The right option to this question is conversion machine readable. Okay, OCR, optical character reader. Moving to our next question. What is primary use of magnetic ink card reader? MICR का यूज़ क्या है? टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल, टू रीड मैग्नेटिक इंक्स ऑन चेक्स, टू स्कैन बार कोड्स, टू रिकॉर्ड वीडियो गेम. द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, टू रीड मैग्नेटिक इंक्स ऑन चेक्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. विच टाइप ऑफ डाटा डज अ बार कोड रीडर प्राइमरली रीड? मैग्नेटिक इंक डाटा, एनालॉग सिग्नल्स. ऑप्शन सी, बार कोड डाटा रिप्रेजेंट बाय लाइट एंड डार्क लाइन्स. ऑप्शन डी, वीडियो एंड ऑडियो डाटा. तो इसका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21.
What does barcode reader convert barcodes image into? Option A, numeric values. Option B, magnetic ink data. Option C, alphanumeric values. Option D, analog signal. The right option to this question is option C, alphanumeric data. Okay. इसके बाद इसमें सिर्फ 21 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।